हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। नाउ फ्रेंड्स, इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम द डेली हिंदू एडिशन ऑफ 21 जुलाई 2022। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़। पहला न्यूज़ श्रीलंका से आ रहा है दैट रानिल विक्रमसिंघे हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ क्राइसिस हेड श्रीलंका। ठीक है, कहीं ना कहीं देखिए हिस्ट्री रिपीट करती है अपने आप को। जैसे कि आप 1991 में देखेंगे जब इंडिया के ऊपर सेम बीओपी क्राइसिस आया था, ठीक है, तो उस वक्त इस बीओपी क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए उस वक्त के जो हमारे प्रेसिडेंट थे पीवी नरसिम्हा राव, उन्होंने हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं श्री मनमोहन सिंह, उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था एंड ही इंट्रोड्यूस्ड एलपीजी, दैट इज़ कॉल्ड एज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। जो अब आज ये देखते हो कि बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में आती हैं, जो आप इफ़ यू विल टॉक विद योर पेरेंट्स, जो उनके चाइल्डहुड में जो चीज़ें थी वो आज बिल्कुल नहीं है, एक नया इंडिया दिखता है। उसके पीछे कहीं ना कहीं ये 1991 का एलपीजी है, दैट इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है जब आप प्राइवेट सेक्टर्स को आज़ादी देते हो। पहले एक चलता था, पहले हर चीज़ के लिए एक लाइसेंस चलता था, कोटा चलता था, भाई कौन सा प्राइवेट सेक्टर कितना प्रोडक्शन करेगा, ठीक है, तो उसके लिए एक लाइसेंस, एक कोटा फिक्स किया जाता था, तो उसको ख़त्म किया गया। दैट इज़ कॉल्ड एज लाइसेंस राज। कोई कोई इसको लाइसेंस राज कहता है। देयर वाज वन एक्ट विच वाज कॉल्ड एज एमआरटीपी एक्ट, ठीक है ना, मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, उसको ख़त्म किया गया और कॉम्पिटिशन एक्ट को लाया गया। दैन प्राइवेटाइजेशन मतलब कि पहले बहुत सारे सेक्टर्स थे जो गवर्नमेंट कंट्रोल थे, फिर वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स को भी अलाउ किया गया टू फंक्शन। फॉर एग्जांपल टेलीकॉम सेक्टर इज़ द बेस्ट एग्जांपल। अब आप देखेंगे धीरे धीरे रेलवेज़ का भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि फॉरेन कंपनीज दे कैन कम एंड सेट अप देयर कंपनीज इन इंडिया एट द सेम टाइम इंडियन कंपनी कैन ऑल्सो सेटअप और दे कैन एक्वायर एनी फॉरेन कंपनीज, दैट इज कॉल्ड एज एलपीजी। ओके, सो श्रीलंका इज़ ऑल्सो गोइंग थ्रू बीओपी क्राइसिस। उसके बाद वहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ। गोटाबाया राजपक्सा ही हैज़ टू रिजाइन, देन रानिल विक्रमसिंघे बिकेम एक्टिंग प्रेसिडेंट फर्स्ट एंड नाउ ही हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। इट वाज 3-way कॉन्टेस्ट। एक तो रानिल विक्रमसिंघे थे, उसके बाद डुल्लास थे, फॉर्मली राजपक्सा अलाइंड एंड नाउ इंडिपेंडेंट, ओके, एंड देन अनुरा कुमारा दिसानायके। So these were three, it was 3 contests, but after all Ranil Wickremesinghe he got 134 votes in the 225 member parliament. Fine, so that's important. The next is Zubair walks out of jail as Supreme Court grants bail in UP case. So यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि Alt News co-founder Mohammad Zubair, now he has been given bail by the Supreme Court, and now see the importance of the order. So he has got interim bail in all 6 FIRs which was registered in Uttar Pradesh, and the court has disbanded UP Police Special Investigation Team, that is SIT, to investigate FIR against him, and now all the charges has been clubbed together and it has been transferred to Delhi. उसके बाद Zubair is not barred from tweeting, and then he may approach Delhi High Court to quash any present or future cases registered on the same issue. हमने कल भी इसके बारे में एक एडिटोरियल में पढ़ा था अबाउट मल्टीपल FIR. सो हियर द सुप्रीम कोर्ट हैज़ क्लब्ड ऑल द FIR टुगेदर. द नेक्स्ट इज 10th शेड्यूल. नाउ लेट मी गिव यू सम बैकग्राउंड. 10th शेड्यूल, ठीक है ना, इसको एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं इंडिया में, ठीक है. नाउ इन दिस एंटी डिफेक्शन लॉ, दैट इज 10th शेड्यूल, जब ये पास हुआ था 85 में, तो इसमें 2 कंडीशंस ऐसे थे विच वर नॉट कवर्ड अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ. मतलब 2 कंडीशंस ऐसे हैं जब इट विल नॉट बी कंसिडर्ड दैट द मेंबर ऑफ द पार्टीज हैव डिफेक्टेड. डिफेक्टेड का मतलब क्या होता है? डिफेक्शन का मतलब व्हेन वन member of one political party, when he leaves his or her parent party and joins another party. So those 2 exceptions were merger and split. स्प्लिट का मतलब होता था कि 1/3 मेंबर, अगर पार्टी के किसी पार्टी के 1/3 मेंबर वो उस पार्टी को छोड़ के दूसरा कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं या कोई नया फैक्शन बनाते हैं, न्यू पॉलिटिकल पार्टी अगर वो कुछ बनाते हैं, न्यू फैक्शन बनाते हैं, देन इट इज कॉल्ड ए स्प्लिट. मर्जर का मतलब व्हेन 2/3 ऑफ द
पॉलिटिकल पार्टी मेंबर्स दे मर्ज विद अदर पार्टी, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसके बाद क्या हुआ, आगे चल के 2003 में 91st अमेंडमेंट एक्ट आया और उसने स्प्लिट को ख़त्म कर दिया। मतलब नॉट स्प्लिट वाज नॉट एन एक्सेप्शन अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। मतलब अगर अब स्प्लिट होता है देन द मेंबर्स विल बी डिसक्वालिफाइड अंडर डिफेक्शन। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इज आस्किंग द शिंदे फैक्शन ऑफ शिवसेना दैट देयर डिसेंट अमाउंट्स टू स्प्लिट और मर्जर। सो इफ इट अमाउंट्स टू स्प्लिट, ठीक है ना, जैसे देखिए व्हाट इज स्प्लिट, स्प्लिट इज फ्रॉम द ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी विदाउट अ सब्सिक्वेंट मर्जर विद अनदर पार्टी और फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू फैक्शन। Now this is no longer a defense from disqualification under the 10th schedule, that is anti-defection law. So here Supreme Court has asked that यहाँ पे सुप्रीम, अगर आप यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो जो शिंदेस फैक्शन है इट हैज़ नॉट मर्ज्ड विद अनदर पार्टी और इट हैज़ नॉट फॉर्म्ड अ न्यू पार्टी, ठीक है ना। मर्जर होने के लिए क्या होना चाहिए कि 2/3 ऑफ द मेंबर शुड मर्ज with another party or they should form a new party, but they have not formed a new party. They claim that they are the real Shiv Sena. So the Supreme Court is asking that whether this will amount to split. अब अगर split अगर हो गया ये, तो एक दिक्कत यहाँ पे ये हो सकती है कि split को तो protection है नहीं anti defection law के अंदर, so these members can get disqualified. The next is news from Ladakh. Now देखिए friends, हम कुछ दिन से करते आ रहे हैं about the 16th round of talk. 16th round of talk. We are discussing about the 16th round of talk. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे this 16th round of talk में that China is planning to build an highway through Aksai Chin running along the Indian border which connects Xinjiang with Tibet. अब ये कब China is mulling this new plan after the failure of 16th round of talk which was focusing on de-escalation in patrolling point 15 in Gogra Hot Spring area. वो तो fail हो गया. Okay, now China is planning to make a new highway. China already has one highway in this area which was built in 1950s, that is called as G219 highway. Now this new highway that is called as G695 National Expressway will be the only second national highway through the disputed region. What is this disputed region? Aksai Chin. ये अक्साई चीन में चाइना कंट्रोल्स 38,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ इंडिया विच इज क्लेम्ड बाय 38,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया विच इज क्लेम्ड बाय इंडिया. ओके, एंड नाउ दिस हाईवे इज गोइंग टू बी इज टू बी कंप्लीटेड बाय 2035. ओके, तो हमने कल पढ़ा था दैट 16 राउंड ऑफ टॉक विच एंडेड इन इम्पास. आफ्टर दैट चाइना हैज कैरिड आउट एयर ड्रिल्स इन दैट सेक्टर. And now this is the current development related to India-China border dispute. Now about the editorial, a hint of stability. So it explains you that what is going on in Sri Lanka. जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं उसको एक ही आर्टिकल में एक्सप्लेन करता है. So if you will just see that what is the challenge to the new president who has been elected, that he has to reach out to people including the protesters in Colombo who are demanding his resignation. Okay, now then he has to build credibility with them, which requires that Ranil Wickremesinghe has to distance himself from Mahinda Rajapaksa. Okay, now if he has to satisfy the public demand, and then he has to see that the IMF bailout package is implemented. Okay, so these are some of the challenges to the newly elected president Ranil Wickremesinghe. Now coming to New Delhi. So if you will just see over here that New Delhi has adopted three-pronged strategy, that is India. First is that it has expressed sympathy with the people of Sri Lanka, and then it has extended unprecedented financial assistance, credit lines and essential food, fuel and medicine worth $3.8 million since the start of this year, and then distancing itself from the Rajapaksa. Okay, so this has generated goodwill among the people of Sri Lanka for India. Okay, if we compare with other partners of Sri Lanka, that is China. Now if we will just compare India and China, so India has provided help of $3.8 billion and China has just provided help of $74 million. The next is India Vietnam ties from stronger to stronger. So यहाँ पे we have to see that India Vietnam ties is the part of Act East policy, and Vietnam has become an important factor in the Indo-Pacific region. Now in 1991
इंडिया लॉन्च लुक ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो लुक ईस्ट पॉलिसी का फोकस क्या था, जो हमारे साउथ ईस्ट एशियन नेबर्स हैं, दोज हु आर आवर मैरीटाइम नेबर्स, लुक ईस्ट पॉलिसी, इनके साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाना। देन इन 2014 दिस पॉलिसी वाज अपडेटेड टू एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो 2014 में it was not only the economic cooperation but also defense cooperation. Okay, so India and Vietnam, they are celebrating the 50th anniversary of their diplomatic relations this year. Okay, now India and Vietnam, they have a common concerns. So if you will just see that India is essentially a maritime nation. Why we call India as a maritime nation? Because if you will just see the Indian peninsula, okay, so this area about 7,500 kilometer of coastline. So India has about 7,500 kilometer of coastline. Okay, so that's why India is called as essentially a maritime nation, and the oceans, they hold key to India's future. Now why we are saying that? Because India's external trade, that is over 90% by volume and 70% by value, is by sea, and then hence India is too much dependent upon sea for its growth prospects. Now if you will just see that there are some commonalities between India and Vietnam concerns. So it sees that the strategic dimension of Indo-Vietnamic relations were initiated during the 1980s. ठीक है, तो जब चाइना का एग्रेशन स्टार्ट हुआ साउथ चाइना सी में, जिसको पैसिफिक ओशियन का मेडिटेरेनियन सी भी कहते हैं, ठीक है ना, साउथ चाइना सी को, उसके पहले से ही इनका रिलेशन है। उसके बाद 1990s के बाद हम देखते हैं कि इंडिया स्टार्टेड परस्यूइंग लुक ईस्ट पॉलिसी विच वाज लेटर अपडेटेड टू एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एंड वियतनाम हैज़ बिकम अ वेरी वैल्यूएबल पार्टनर फॉर इंडिया इन द इंडियन ओशन, इन द साउथ चाइना सी एंड पैसिफिक ओशन रीजन। जैसा कि हम जानते हैं दैट द टू कंट्रीज, दे आर वर्किंग टू एड्रेस द स्ट्रेटेजिक कंसर्न इन साउथ चाइना सी related to energy security and open and secure sea lines of communication. इसका मतलब होता है कि जो भी शिप पास हो रही है इस एरिया से, वो बड़े आराम से पास हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे दैट इंडिया एंड वियतनाम, दे फेस टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स विद चाइना। ठीक है ना, वियतनाम का मैरीटाइम डिस्प्यूट है चाइना के साथ, इंडिया का टेरिटोरियल डिस्प्यूट है चाइना के साथ। Hence, Vietnam is of great strategic importance to India. Now, if you will just see, there are 4 key driving factors for growing relation between India and Vietnam. The first is to counter China. The second is to increase trade. Okay. The third is to intensify India's presence in maritime domain. Okay. And the fourth is the Indian Navy, which underlines the importance of a forward maritime presence and naval partnership. Okay, now let's see the figure. Almost 55% of the India's trade with the Indo-Pacific region passes through the South China Sea. Now this is very important, that why India is interested in proliferating in improving its relationship with Vietnam, because South China Sea जो है वो बहुत important है इंडिया के perspective से, because 55% of India's trade is passing through that. उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे that ever since the formal declaration of strategic partnership in 2007, which was upgraded to comprehensive strategic partnership in 2016. So see, these years are very important कि strategic partnership इंडिया और वियतनाम में कब लॉन्च हुआ था, तो 2007 में, and in 2016 it became comprehensive strategic partnership. So the scope of India-Vietnam cooperation in defense, economy and strategic cooperation has increased. Then there is the two countries that signed joint vision for defense cooperation and a memorandum of understanding on mutual logistic support in June 2022, that is last month. Then a $100 million defense line of credit has been implemented, and India has announced early finalization of $500 million defense line of credit to enhance defense capability of Vietnam. So these are some of the relations, new defense and defense cooperation between India and Vietnam. Okay, टारगेट क्या है? टारगेट यही 4 टारगेट है जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है कि ये रिलेशन क्यों जरूरी है। तो ये रिलेशन इन 4 फैक्टर्स के लिए ज़रूरी है, दैट इज़ countering China, trade, development in maritime domain,
and making Indian Navy a forward maritime force in the region. उसके बाद if you will just see that it is providing comprehensive underwater combat operation training to Vietnamese sailors at INS Satavahana in Visakhapatnam. Then India's defense minister, कौन है India defense minister? Shri Rajnath Singh. So he has handed over 12 high-speed boats to Vietnam, okay, which is a Kukri class corvette. Now the next is that if you will just see that there are many sub-regional and multilateral frameworks which are common to both India and Vietnam. So it is the Indian Ocean Rim Association, the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation, Mekong-Ganga Cooperation, Asian Defence Mechanism Plus or the Asian Defence Ministers Meeting Plus, then the Special Association of Southeast Asian Nations India Foreign Ministers Meeting. Okay, they have proposed an India Maritime Exercise and informal meeting between India and Asian Defence Ministers in November 2022. So these are the other platforms where India and Vietnam can cooperate for making Indo-Pacific region free of conflict, open to all, transparent and protecting the sea lanes so that trade can prosper. The next is the sweltering heat wave across Europe. So we are talking about Europe. So on July 19, मतलब हमने कल के न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि UK has recorded its highest temperature which crossed 40 degrees Celsius. Okay, now dozens of towns and regions across Europe, they are reeling under this heat wave, which is they have termed as heat apocalypse. Now scientists, they are unanimous that these heat waves are result of climate change caused by human activity. Now there are many nations in Europe, Portugal, France, UK, Germany, etc., which are witnessing this large swath of heat wave. Okay, now the next is NIT conundrum. ठीक है ना, NIT conundrum ये एक important topic है तमिलनाडु से रिलेटेड. तो देखिए क्या है कि NIT एग्ज़ाम आप जानते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट. दिस इज़ द टेस्ट फॉर UG PG मेडिकल सीट्स. ठीक है, एंड दिस टेस्ट इज कंडक्टेड बाय NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. नाउ तमिलनाडु हैज़ पास्ड द बिल, ठीक है ना, दैट इज to introduce a new qualification for admission to medical courses in Tamil Nadu, state of Tamil Nadu. So then this bill was presented to governor, and the governor has reserved this bill for president. Now Tamil Nadu is the state which was the first to oppose NIT. Okay, other states like Gujarat, they have also opposed the NIT in the earlier reasons. Okay, and then other states which are like Jammu and Kashmir अगर आप देखेंगे, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना देखेंगे, that they have protested against this bill. Now Tamil Nadu, it established one committee that is called as A.K. Rajan committee to study the effects of need-based examination process on the students of Tamil Nadu. Okay, so if you will just see that the committee, it was asked to find out how the entrance test has adversely affected the students from the rural and urban poor families. Okay, and especially those who have studied in Tamil medium. Okay, so in this report, the report said that the state government may undertake immediate steps to eliminate NEET from being used in admission to medical programs at all levels by following the required legal and legislative procedures. Now the next data it has showed is that 99% of students who got admitted in medical colleges post NEET, they had gone for coaching. Okay, now if you will just see that 2021 a fresh bill was passed by Tamil Nadu Legislative Assembly to admit students to MBBS BDS courses only on the basis of class 12 board examination. Okay, then the bill was returned by the governor for the first time. Then the bill was re-adopted by the house and sent back to the governor, and then since then the bill has been forwarded by the governor to the Ministry of Home Affairs for presidential assent. Matlab the bill has been reserved for the president. Now the next is from environment
related issues. So this is about cheetah. तो 1952 में cheetah was declared extinct in India. ठीक है. After that, India has signed an agreement with Namibia, a country in Africa, to reintroduce cheetah in Kuno National Park. This Kuno National Park, it is in Madhya Pradesh. ठीक है. After that, if you will just see that Kuno is also a national park which was earlier identified for translocation of Gir lions of Gujarat. So if you will just see that Gir forest in Gujarat, it is the only habitat for Asiatic lion in the world. So cheetahs, they are going to be introduced in Kuno National Park for 1 year trial. Okay, and if they can adapt to this habitat, then the reintroduction program can move forward. Now this cheetah, they will not be Indian cheetah, they will be African cheetahs from Namibia who will be introduced in the Indian habitat. The next is, after Putin's fresh warning, the European Union tells member to cut gas usage. So over here we are talking about the Nord 1 stream. So that is Nord 1 stream pipeline which supplies gas from Russia to European countries, and it accounts for more than a third of Russian gas exports to European Union. अब यहाँ पे क्या किया है कि रशिया ने वार्निंग दिया कि it is going to reduce the supply to Europe from this pipeline. So the European Union has asked its member to cut the gas usage by 15%. अगर हम यूरोप की रशिया की बात करें, so रशिया earlier Russia contributed to 15% of oil and 40% of gas supply to the European countries. The next is analysis. What does Putin want from Iran? तो अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है. तो इसको हमने कल देखिए, अगर आपको याद होगा, yesterday we did Shanghai Cooperation Organization. If you remember, Shanghai Cooperation Organization. तो इसमें समरकंद में एक समिट होने वाली है, ठीक है. इस समरकंद समिट का हाईलाइट क्या होगा, दैट ईरान विल बिकम न्यू मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में पहले से ही रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, काजाख्स्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, they all are members. Okay, then Belarus will apply for membership. So there is a growing congruence between Russia and Iran. ठीक है. अब दोनों की स्टोरी देखिए लगभग सेम है, और ये लोग बहुत सारे एरियाज़ में, खासकर मिडिल ईस्ट में कोऑपरेट भी करते हैं. पहली बात तो ये देखिए कि ये it starts from Afghanistan, the US withdrawal from Afghanistan. So US withdrew from Afghanistan. Okay, so there was a vacuum. This vacuum was to be filled by regional countries, especially Russia and Ukraine. तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, what happened over here, that now SCO has taken a lead over here, and there is a growing congruence between Russia and Iran, especially because अगर हम दोनों को देखेंगे, so both of them, they are reeling under western sanctions. ठीक है ना, इनकी इकोनॉमी सफ़र कर रही है बिकॉज ऑफ वेस्टर्न sanctions. Then second is that Russia is also isolated from the world because of invasion to Ukraine. Okay, similar thing has been done for Iran also earlier because of nuclear program of Iran. Then इसके साथ साथ अगर देखेंगे तो ईरान एंड रशिया दे ऑलरेडी हैव अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. अगर हम देखेंगे कि इन सीरिया तेहरान एंड मॉस्को दे हैव हेल्ड प्रेसिडेंट बशर अल असद टू फाइट द सिविल वॉर. फाइन. एंड उसके बाद हम देखेंगे कि यूएस ने यूनिलेटरली पुल किया आउट ऑफ 2014 ईरान न्यूक्लियर डील विच हैज़ बीन स्टॉल्ड. फाइन. एंड हेंस ईरान हैज़ कॉल्ड दैट नाउ, हमने कल भी डिस्कस किया था, look to the east for geopolitical orientation. Then in March 2021, Iran signed a 25-year comprehensive strategic partnership agreement with China. And in 2001, if you will just see that Russia and Iran, they had signed a 10-year cooperation treaty
And last year, that is 2021, Iran has said that it was in advanced stage of discussion to clinch a 20-year strategic partnership with Russia. Now, here they have their common interest and common foes. So their partnership has been characterized by both cooperation and competition. Cooperation, especially in Syria like that, and competition in the field of oil exports. The next is center pays windfall tax. Center lowers windfall tax on crude and junks petrol export levy. सेंटर ने कुछ दिन पहले ये टैक्स लगाया था बिकॉज ऑफ विंडफॉल गेन इन प्राइजेस ऑफ क्रूड ऑयल पेट्रोलियम. ठीक है, अब सेंटर ने वापस से ये टैक्स ले लिया है बिकॉज द ऑयल प्राइसेस आर गोइंग डाउन. मेन बात ये है कि इसमें विंडफॉल गेन क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए. विंडफॉल गेन का मतलब होता है द प्रॉफिट एनी कंपनी एक्रूज ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन. यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन क्या था, देखिए ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ती जा रही थी. ठीक है, तो जैसे ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ते जा रही थी तब क्या हो गया कि पेट्रोलियम और डीजल के दाम भी बढ़ रहे थे. अब इनके जब दाम बढ़ने लगे तो ये इनका सेलिंग प्राइस भी बढ़ जाएगा. फाइन, तो टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड विंडफॉल टैक्स. So this is called as windfall gain and windfall tax. Now RBI is ready to wage $100 billion rupee defense. So RBI is prepared to sell 1/6 of its foreign exchange reserve to defend the rupee against the rapid depreciation. तो हम जैसा कि जानते हैं कि rupee it has crossed 80 rupees mark per $1 and has lost more than 7% of its value in 2022. So now rupee, so what RBI is going to do, RBI is going to flush dollar in market so that there is dollar availability and rupee gains its strength. So अगर हम देखेंगे तो RBI's currency reserves have slid more than $60 billion from its peak of $642.45 billion in early September. तो सितंबर में हमारा फॉरेक्स था $642.45 बिलियन, अब वो 60 बिलियन कम हो गया बिकॉज ऑफ dwindling rupees. The next is very important news, central bank digital currency. So RBI is going to initiate CBDC in wholesale and retail sector. So the Reserve Bank of India is in the process of implementing the central bank digital currency in a phased manner for wholesale and retail segment. So the introduction of CBDC, it was announced in the Union Budget 2022-23. So CBDC is like that there is a cryptocurrency bill 2021 which bans private cryptocurrencies transaction in India but allows RBI to have a digital currency that is called as central bank digital currency. Okay, so over here now the Reserve Bank of India will be in the process of implementing the central bank digital currency in a phased manner. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.